दिखा दो मुझे एक बार, ताकि आपके प्रोफाइल पे अगर लाइट आए तो बेहतर है. बट 2025, a very warm welcome to Rajni Chhabra. She is a retired English lecturer, multilingual poetess, translator, polyglot, blogger, reviewer, social activist, numerologist, international director, and an editorial team of Ruminations and Glimpses, 2 bilingual UGC journals, global ambassador for human rights and peace, IHRAC, associate member of International Academy of Ethics. Published works include 2 poetry books in English, 4 Hindi, 9 are translated books from Rajasthani, 10 from Hindi, 1 from Punjabi, 1 from Nepali into English as target language. Her 2 Hindi poetry books have been translated into Punjabi and Maithili, and 1 English poetry book into Bengali and Rajasthani. 13 books on numerology and numerology. Rajni has co-authored in 8 international anthologies and coffee table book Lilacs in Bloom. Besides contributing regularly to digital literature, she's participated in several national and international literary events. A very warm welcome to Rajni Chhabra. Now, this is today the first of the many events and chats that we will be having under the banner of International Academy of Ethics, which is co-founded by the President, Seneca Award Laureate, Dr. JERNAIL Singh ANAND, who is here with us today, who is a towering literary figure, whose work embodies a rare fusion of creativity, intellect, and moral vision. Credited with an opus of 180 plus books, and 2 of them he just received, in fact, today, I believe. He has won the Charter of Morava in Serbia, France, Kafka, Germany, Ukraine, Czech Republic, Maxim Gorky, Russian Award. His name adorns the Poets' Rock in Serbia. Founder, President, as I mentioned, of International Academy of Ethics, he was conferred Doctor of Philosophy by University of Engineering and Management, Jaipur. His most phenomenal books are Lustus, The Prince of Darkness, which is an epic, Philosophia de Anand, a work of philosophy comprising 10 of his books under one roof. He's now coming up with his 12 epic poems in 2 volumes, Epicacia, Volume 1 and 2. He is not just an Indian author, but a global voice challenging readers to confront complexities of existence while offering hope through art and ethics. His legacy seems poised to endure as a beacon of conscience in a turbulent world. If Tagore is the serene sage of a colonial past, Dr. Anand is the fiery prophet of a chaotic present. Dr. Anand's genius lies in his relentless ambition and ethical depth. Dr. Anand may well be considered as the conscience of the 21st century, carving a unique niche among Indian English writers with a voice that resonates globally while remaining fiercely Indian. Dr. Anand, the founder, president of IAE, I welcome you to please talk about Rajni Chhabra, who's the guest today and who we will be talking about and interacting with. Over to you, Dr. Anand. Thank you so much, Rupa ji, for your kind words and wonderful introduction to International Academy of Ethics, which is, we have Dr. HERMAN, SEKULIC as its vice president, and hundreds of international personalities who figure as our distinguished guests and fellows. Today, International Academy of Ethics plays host to one of most luminous personalities who is also an associate member of the Academy. I have known
Rajni Chhabra for almost 7 years, and I have seen her grow in her stature as a poet, a translator, and a numerologist as well. She has to her credit several works of Hindi and English poetry, and her translational projects situate her as a master of the craft. Recently, she has translated world-famous text, My Epic Lustrous, The Prince of Darkness, into Hindi, which is under publication. Naturally, we are glad today she is with us, and I welcome her to her own house. Academy belongs to her. And before I ask Rupa to continue with her questions and all that, Rajni ji, I have... Good evening. Good evening, good evening. I have one question for you. Yeah. And it is, you have translated so many books, right? Yeah. Is it possible to translate a text in its entire truth? Frankly speaking, we don't have to translate in verbal sense only. We have to gather the feeling, the emotion conveyed behind it. And in the initial stage, the very initial stage of my translation, I had one confusion for which I had to get it clarified. It was that I was translating a book from Rajasthani into English, and there was one word, there was one sentence that lying empty are all her chambers of heart. In Rajasthani, it was written Somvar to Ditwar, means Monday to Sunday, all the 7 days. But while translating in English, we can't translate it like this. We have to say Sunday to Saturday. So this much liberty has to be taken. And besides, when we are referring, supposing in Rajasthani, we are referring to vegetation or their customs and all that, we can't describe in detail Khejuri tree, we can't describe Sangri or their delicacies and all that. So we'll put a footnote for that, describing that this is the particular vegetation of a period. And additionally, recently I translated one book from Nepali into English. So their culture background is very, very much different from that of North. So in one of the poems, he was mentioning that the village folk, they are dancing to the tune of Nobat Baja. Now Nobat and Baja, how can it be described? We can't give its manufacturing details and all that. We just have to put a footnote saying that these are the folk instruments of Nepal, and they enjoy dancing to its tune. And if you don't mind, I will refer to lustrous also. During translating lustrous into Hindi, I had one confusion. In one canto, it is referring, that canto was about he Ranjha. So Ranjha, he is very desperate without heat. So while wailing, he says, oh, he says Hire. He addresses her as Hire. So if we go to literal translation, most of those who are not acquainted with the love story of Hira and Ranjha, they will treat Hira as diamonds. They might treat it as diamonds. I had this notion in my mind. So instead of writing Hira over there, I just wrote Oh Heat. So that is it. So some liberty has to be taken. That's it. Now I refer it back to Rupa ji. Please go ahead with your... Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Anand. Thank you for the International Academy of Ethics, which you founded and you're the president of, and for this platform, wherein we are starting the first of the many series. We are starting with Rajni Chhabra. A very warm welcome, Rajni. Aapka bahut swagat hai. And we are going to speak in English and Hindi because we have a lot of followers of Rajni ji
On social media, she has close to 50,000 followers. And I hope it's all right by you, Dr. Anand, if you mix up Hindi and English. Yeah. Yeah. So wonderful. Hello, dear Rupa. I'm so pleased that I've been chatting with you in such a pleasant manner. I can just write from the very beginning. It has been a pleasure interacting with you. In your English whatever. बढ़िया, तो वी विल डू दैट, बिल्कुल वही करेंगे हम. तो आपके बारे में रजनी जी जो मैंने जाना है आपसे बात करके, काफी नजदीकी से आपसे एक दो बार बातें हुई हैं और आपने दिल खोल के काफी कुछ शेयर किया है. तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें, आपके चाहने वालों को ये बता दें कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा किया. न्यूमरोलॉजी तो यूं ही जिंदगी में आपके आ गया, शुरुआत आपकी वहां से नहीं हुई. आपने बस एक किताब देखी जिंदगी के ऐसे टाइम पे जहां पे शायद आप यंग थे, उसके बाद में एक मोड़ आया एंड यू टर्न टू इट. सो डू टेल अस अबाउट योर जर्नी इनटू न्यूमरोलॉजी व्हिच टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड यू यूज योर स्किल्स to touch the lives of people around you. Over to you. Actually, when I was studying in Kashmir, my dad was posted there. He was in military engineering services. So I graduated from Kashmir University. So one day, by chance, a research scholar from Oxford University, he came and he came to study hands, and he studied only those hands that were typical, means that were worth keeping record. He used to take a print of those hands, those palms that were useful to him for study, for further reference and research. So there were nearly 100 people packed in that hall. So first of all, he began with my dad. Of course, he was hosting the program. And besides that, 4 or 5 other fellows he studied. Then I was not mentally prepared that he will be studying my hand as well. So he said that he just told me to show my palm. And he said that I find your hand worth studying. So he applied jellies and all that, and then he was a typical research scholar. He was seen with this magnifying glass. Then he told me several things that proved true. He told me till age of 35 only. Till I will be 35. He told me that I will be getting fame. I will have banner of my own name. I will have my own house, and so many other things he told. So I was surprised that at that time I was not very active in multifarious activities. So I said, he is saying okay, but later on when these things proved true, I wrote a book at the age of 31, sorry 33, and now I have banner of my name. Then he had said for international acknowledgement. Of course I am getting all that. But my age, he told till 35 years only. Means there was no life sign after that. And it developed later on. So I believed palmistry, but then there was that lines keep on changing. And these days we have facility on social media that we can read online. But in those days there was no such facility. So how could one go to palmist often? And then after my dad was transferred from Delhi to Bikaner, during journey I was traveling along with my sister. She got their own beautician. She was interested in that, and I got Kiro's book of numbers. So you started with one book by Kiro, which most of us during our college days or high school we have read, and we tried figuring out our futures and our present and the traits and all that. So that was the beginning of your exposure to numerology. But you started with palmistry, where your palm was read only up to 35 years of age. That's because your lifeline stopped at 35. At that point in time, it changed later. And whatever he predicted came true for you. 100% true. Right. तो कीरो की किताब से लेकर रेलवे स्टेशन से जो आपने खरीदी, आपका ये रास्ता यहाँ तक जहाँ आप न्यूमरोलॉजी की 13 बुक्स 13 किताबें लिख चुकी हैं आप, और लिखती हैं, बात करती हैं, बताती हैं, फिर फीड करती हैं, ये आपने कैसे किया? So actually 1976 में I studied it just to pass my time in study, not very seriously. But then, and after that same year I got married and I was entangled in joint family with occupations of family, and then after that I was continuing some or other courses side by side.
So it never occurred to me that I should go in it deeply. Then in 1989, the severest tragedy of my life happened. So then I thought that if these farming say, these astrologers, they do matchmaking and say that your life will be perfect and you'll have a happy married life, then why this happened to me? So that was the question in my mind, that I should re-study the whole thing. So you confronted the struggle in your life by turning to knowledge, learning and wisdom, and you said, let me figure out why whatever has been predicted for you is coming completely But wrong. frankly speaking, I couldn't get direct answers from Kiro as well. I did a bit of astrology also. Then after my husband's demise, I got promotion and I was transferred to a different school. Over there was one of my ex-colleagues, Kamla Khanna Didi. She was at the numerology. She was doing since several years. Then just casually she asked about date of birth of my kids. So luckily both are born on the same day, 2nd July. And mine is, as per Indian date, mine is 2nd July, but as per English date, because I was born at 3 a.m. plus 3 minutes at night. So just to interrupt for a second, if I may, the reason there are two dates is because as per our Indian system, we follow the lunar calendar. Whereas when you say the other date, it is the regular calendar that is followed worldwide, globally. Hence the two dates and the times. Yeah, please go ahead. Yes. So as per regular calendar followed worldwide, I was born on 3rd because I was born at midnight before sunrise. Okay. And as per Indian calendar, I was 2nd July. So we used to cut a common cake. My father-in-law said that we should celebrate on a single day only, and he called it family birthday. So I told her that this is 2nd July is our family birthday. She said, she challenged me that if this is your date of birth, if 2nd is your date of birth, I will start my practice of all this year. She said. Then it occurred to me that how could it that she's so confident, and then what are the more details of the numbers that she knows and I am not knowing. Then I reopened that book from that point of view. And later she guided me a bit about how we can see our future by luck number as well, not by birth number. We have to see luck number as well. That wasn't mentioned in detail in Kiro's book of numbers. She guided, and then I started practicing on my own. So I had no dearth of data, because so many people I'm interacting daily. I could study any day and then next day or a month or a week, whatsoever it was, or after a year, I could ask them again whether what I told you, it went correct, and it always went correct. तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जब आपके सामने तारीख दी जाती है, एक होता है बर्थ नंबर, जो वो तारीख होती है, द डेट ऑफ बर्थ, और एक होता है लक नंबर या डेस्टिनी नंबर, जो कहते हैं कि आप पूरा ऐड करते हो डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड द ईयर ऑफ बर्थ. तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी. इज दैट ऑल राइट? डू आई हैव योर परमिशन, रजनी जी? मैं कुछ डेट आपको पूछना चाहूंगी और मैं अपने डाउट क्लियर करना चाहूंगी, और देखते हैं कि वो कितना खराब. हाँ जी, हाँ, बढ़िया. इनफैक्ट हो सके तो मैं आपको उसका नंबर भी दे सकी तो आपको दे दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो लोग जो एक ही तारीख को उनका जन्म हुआ है, एक ही साल, एक ही जगह, 1 मिनट के फर्क में, ठीक है, एंड इट्स 13th November 1997, तो उनका बर्थ नंबर 4 एंड उनका डेस्टिनी नंबर 5 हुआ, लेकिन उनके पैदाइश में 1 मिनट या 2 मिनट का फर्क है. तो उनकी डेस्टिनी तो एक हो नहीं सकती. तो मेरा सवाल है, आप कैसे बताओगे? इनिशियली नहीं होती है. आई स्टडीड अ लॉट अबाउट थिंग्स. इनिशियली नहीं, इनिशियली होती है रादर, इनिशियली द लकी स्टेज, बट द मोमेंट दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल. आपने देखा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका असर आप पे आएगा, या जिन लोगों से आप मिलते हो, जिनके साथ आप रहते हो, दैट इंटरेक्शन, that the fellows that you are getting by luck, it's only or by luck, by chance of luck, तो उनका इंफ्लुएंस भी तो आप पे आएगा ना. एंड सेकेंडली, अगर देखो, अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये, जैसे हम किसी को बोलेंगे तुम राजा बनोगे, यू विल,
अच्छा 6 नंबर का है, 6 का बॉन्ड टू, बहुत लग्जूरियस लाइफ होती है उनकी। राइट अगर हम उसको बोलते हैं तुम राजा बनोगे, इस चीज जी से हम एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड या रॉयल बैकग्राउंड से है, या जी उसमें इतनी वो है कि वो इलेक्शन लड़ के जीत लेगा तो बनेगा। जी पर जी अब जो कोई एकदम जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो हाँ स्टेज शो हो रहा है और उस पर उसका राज तिलक हो रहा है। अच्छा सो वी ओके हैव टू सी इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर थिंग्स कि अब ओके वो राजा बने तो सारे 6 नंबर वाले तो राजा बन जाएंगे। नहीं बनते। तो आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको ये डेट दिया 13 नवंबर 1997, द बर्थ नंबर बेस्ड ऑन 13 इज 4 एंड द डेस्टिनी नंबर इज 5। तो आप क्या बताएंगे इनके बारे में मुझे? 4 and 5। हाँ जी 4 and 5। लेट मी टेल यू बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। सर आपको मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं इनके बारे में क्या बताऊंगी। अच्छा एंड यू कैन कैलकुलेट, यू कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ, है ना। आप भी अच्छा प्रेडिक्ट करने लग जाओगे आफ्टर यू लीव दिस इंटरव्यू। ठीक है, ओके तो हम हाँ क्या जी करते हैं कि वही असाइन द सन, द मून एंड ऑल द 7 प्लैनेट्स, दे आर असाइन द प्लैनेटरी वैल्यू 1 to ओके 9। ठीक है, ओके जो नंबर 1 है उसको हम, और उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ है, दे आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे अच्छा 1 है हाँ एंड जी कीप ऑन एडिंग 9, 1, 10, 20, सॉरी 1, 10, 19 एंड देन 28, है ना। ये सारे 1 हुए, क्योंकि हम वापिस सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं ना उसको। 19 भी 1 हो जाएगा बिल्कुल और 10 भी 1 हो जाएगा, और 2 8 10 है वो भी वापिस 1 हो जाएगा, 1 to 1 है। तो उसको हमने अटैच किया प्लैनेट नंबर 1 से, एंड दैट इज दैट प्लैनेट इज सन। उसको 1 नंबर वालों को हमने एसोसिएट किया सन से। अच्छा 2 को 2, 10, सॉरी 2, 11, 11 है ना, देन 20 एंड 29 उसको आपने असाइन किया मून के साथ। अच्छा ठीक है, दैट इज द बेसिक। फिर उसके बाद 3 है, तो उसमें आप 9 ऐड करते जाइए डेट में, है ना। उनको हमने असाइन की प्लैनेटरी वैल्यू जुपिटर। अच्छा और 4 4 को यूरेनस, एंड 5 5 को मर्क्यूरी। अच्छा। तो मैंने आपको जैसे ये डेट दिया, तो इनके बारे में बेस्ड ऑन दिस आप क्या बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल आजा, मैं जैसे आपको ये मैंने बता आपको रही हूँ, एक पहले लेट मी फिनिश। उसके बाद हाँ जी जरूर प्लीज 6 हो गया प्लीज वीनस, 7 अच्छा हो गया इसका नेपच्यून, 8 सैटर्न एंड 9 इज मार्स। अब आप ये देखो कि जो सन है उसकी क्या क्वालिटीज होती है। Instead of me सुप्रीम telling you, you tell me what are qualities of sun. आई एम थिंकिंग nurturer of life, life giving force, energy and everything surrounds and is around the sun force. So if he leaves, he is born to the number 1 person, has all the qualities of the sun. So he will get number 1, he will be dominating, he will Okay be okay asserting, he will be benevolent as well, because sun gives always. अच्छा अच्छा So, okay so you can attach that. Then he will be the person born under number 1. He will like to hold command. He will be intellectual. He will be leading others. This is the अच्छा example. So very हम्म, easy. Numerology is very easy. Nothing complicated in it. Then you come to number 2. हाँ So जी moon. Moon is all rounder. Moon has so many qualities. हम्म It keeps on rising, keeps on falling, but it is all rounder. 16 कलाएं हैं ना, different days, different appearances. हाँ जी Okay, so the person who is born under number 2, he हम्म। will have an all-rounder sort of personality. तो आप ये जब कह रहे हो born on number 2, you are हाँ, adding everything or are you saying just the date? only birth number denotes traits. अच्छा Luck date number और denotes what अच्छा you get by luck. So I got am talking about traits. अच्छा ओके Your personality traits. And got it then this number 2, it has all the qualities of moon. So all-rounder personality, the number 2 person are imaginative, they are romantic, they are good at languages, they are have a sense of rhythm. So you can keep on imagining like this. Huh? Then 3 अच्छा is number of Jupiter. अच्छा So Jupiter is in Hindi called a Guru Grah. गुरु So now number 3 will have qualities of a good teacher. हम्म And Guru dominates. Guru masters the situation. तो जो नंबर 3 है वो क्या करेगा? He will master the situation. अच्छा
and then he will have a sense of responsibility, deep sense अच्छा of responsibilities, and he will be self-disciplined and will like others to be disciplined also. है ना, ये गुरु के फेस उसकी पर्सनैलिटी में आते हैं. अच्छा एंड देन कम्स यूरेनस. अच्छा, अच्छा यूरेनस क्या है? देयर इज इट डजंट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस. इसको हम मानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सन. रिफ्लेक्शन ऑफ सन. अच्छा तो उसमें क्वालिटीज तो सन वाली आएंगी, पर परछाई हमेशा ओरिजिनल से कम होती है. अच्छा ओके ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ तो उसमें वो ट्रेड्स आएंगे पर नंबर 1 से कम आएंगे. अच्छा सेम ट्रेड बट इंटेंसिटी विल बी लेसर. इनोवेटिव रहेंगे, वो कैलकुलेटिव रहेंगे, सब कुछ रहेगा, पर उनका जो ओवरऑल जो पावर्स हैं दे आर लेसर देन दैट ऑफ सन. अच्छा ओके. ठीक है. देन यू कम टू मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी की क्या टेंडेंसी है? कीप्स ऑन स्लीपिंग, है ना. एक जगह मर्क्यूरी को आप एक जगह टिकेगा नहीं ना, वो एकदम उसकी वो फिसल जाता है. फिसल जाएगा, उसकी वो फॉर्म भी चेंज हो जाएगी. तो हम बोलते हैं ना ही ऐसे मर्क्यूरियल माइंड, तो उसका क्या मतलब है कि मूडी, है ना, माइंड. बढ़िया. तो फिर स्पिरिचुअल माइंड है तो हम रिलेटेड ज्यादा वे, तो वो हर टाइम क्या सोचेगा? नई नई चीजें सोचेगा. ही विल बी इनोवेटिव, और वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा. इची फीट. अच्छा ओके. है ना, मर्क्यूरियल. हाँ ओके. then foreign travels, and then he is from abroad, and then his love for calculations, manipulations. ये हो गया मर्क्यूरी का. उसके बाद आता है वीनस पे. नाउ वीनस ही शुक्र ग्रह है. ये वीनस क्या है? इट इज गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. करेक्ट. रोमांस. जो 6 जो नंबर होंगे, आप कभी भी देखना, वो थोड़े अट्रैक्टिव ज्यादा होंगे. दे विल बी ब्यूटी कॉन्शियस. Okay, then they have a deep aesthetic sense. अच्छा. As well as literary sense. आप देखना, डिस्कस इन डिटेल. जो फैशन डिजाइनर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, सेवरल एक्टर्स हैं, दे आर कवर्ड अंडर नंबर 6. अच्छा ओके. आप मेरे पास है बुक में, मैंने पूरा एस्टेब्लिश कर रखा थी स्टडी. गिवन एग्जांपल ऑफ सो मेनी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस एंड फिल्म प्रोड्यूसर्स जो कि नंबर 6 के हैं, एंड दे आर इन दिस साइन फिल्म इंडस्ट्री. अच्छा अच्छा. हाँ. उसके बाद आ गया आपका नंबर 7 आ गया. सो दैट इज नेपच्यून. तो ये अगेन क्या है? दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ मून. अच्छा अच्छा. जैसे यूरेनस रिफ्लेक्शन ऑफ सन है, इट्स लाइक नेपच्यून इज रिफ्लेक्शन ऑफ मून. तो क्वालिटी सेम होंगी, लेस इंटेंस बट सिमिलर. लेस इंटेंस बट सिमिलर. अब नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 8, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि ये ओवर असर्टिव भी हो सकते हैं और वेरी फर्म माइंडेड. यू सीम टू बी नंबर 8. क्योंकि मैंने शक्ल यूं बनाया इसलिए. फीलिंग एज वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फ्रॉम योर फेस आई थिंक आई हैड जस्ट सेड समथिंग. Oh my God! Wow. 8 वाले क्या है? आप हमारे वो उनको देख लो, हमारे पीएम को देख लीजिए, मोदी जी को ही दोस्तों नंबर 8. तो 8 वाले क्या है? दे नो हाउ टू असर्ट दैटसेल्फ एट व्हाट टाइम. कि उनको एक तो काम का नशा रहता है, जिस चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो दे आर आफ्टर इट, और जब तक वो हो नहीं जाएगा दे वोंट लीव इट. एंड देन दे डोंट एक्सपेक्ट फेवर्स फ्रॉम अदर्स. है ना. गुस्सा गुस्सा तब रहता है टाइम की, वो कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं उनके, बट दे डोंट हार्म एनीबॉडी. और 8 नंबर वालों का एक स्पेशल क्वालिटी है कि इफ दे आर प्रोग्रेसिंग दे विल प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग, एंड वंस दे गो इनटू डिप्रेशन दे विल डिक्लाइन टोटली. तो 8 नंबर वालों को तो खास करके ये चीज है कि एकदम अपने आप को कंपोज एंड बैलेंस रखना है, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड नॉट डाउनवर्ड. कि एक बार नीचे गए ठीक है, और एक बार ऊपर गए तो यू आर किंग ऑफ द वर्ल्ड. तो उसके बाद आ गया नंबर 9 हो गया मार्स का. तो मार्स में क्या है? उसमें एक तो उसमें थोड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा, असर्टिव. एंड देन नंबर 9 पीपल, वो क्या है? एकदम इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं. ओके. है ना. एंड दे हैव 8 नंबर के लिए मैं कहना बोलती है स्पिरिचुअल बैलेंस माइंड. तो 9 नंबर में भी सेम है.
और 9th नंबर तो काफी struggles they have to face in life, but ultimately they come out successfully. अच्छा And they are a trustworthy shoulder on whom you can rest. अच्छा वो कभी किसी को हार्म नहीं करते हैं. तो अच्छा अब मैं ये कहूँ, यही जो आपके बर्थ नंबर है, हाँ यही जी अगर आपके लक नंबर की साइड आ जाए तो क्या होगा? Then you take it to future tense. You ऐसे होंगे. अच्छा तो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 5 हुआ, बर्थ 4, 5 लक. हाँ तो 4 है ना, वो इनोवेटिव रहेगा, हाँ जी एक्सपेरिमेंटल मूड का रहेगा, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में अच्छा रहेगा, लीडरशिप ट्रेड्स रहेंगे और थोड़ी रेस्टलेस डिस्पोजिशन ऑफ माइंड भी रहेगी. ठीक है, तो ये तो उसके ट्रेड्स में हो गया. पर अगर वो उसके लक में आ रहा था, ये अभी पर आपको 4 and 5 का था, ये तो उसके ट्रेड्स हो गए. पर क्योंकि उसका लक नंबर 5 है तो उसके क्या, एक तो फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, और कोई भी लाइन जिसमें मैनिपुलेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है जैसे, है ना, इट्स नॉट एन इजी जॉब. तो या फॉरेन ट्रेवल एजेंसी वो खोल सकता है, वो बैंकिंग की जॉब कर सकता है, कैन गेट चार्टेड अकाउंटेंट, ही और शी कैन गेट चार्टेड अकाउंटेंट. तो वो जो 5 के जो बेसिक वो थे वो उसके लक में आ गए, तो उसको वही चीजें लक से मिल जाएंगी. दैट इज. और 8 और 2 का कॉम्बिनेशन फिर आप क्या कहोगे? हाउ डज इट वर्क इफ इट्स बर्थ इज 8 एंड लक इज 2? 8 नंबर जो जिनका बर्थ नंबर है कि वो थोड़े एरोगेंट रहेंगे, असर्टिव भी रहेंगे, बट दे विल प्रूव देयर पॉइंट. ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, दे नो व्हाई आर बिहेविंग लाइक दिस. अगर असर्ट करें तो क्यों कर रहे हैं. एंड देन दे हैव स्पिरिचुअल बैन ऑफ माइंड, एंड दे कैन बी राइटिंग दिस स्पिरिचुअल बुक्स, motivational books, or they can be good at journalism. And then they have luck number 2. That's an additional qualification for them. With luck number 2 will keep them cool. कि उनको कहीं assert करने का लग भी रहा है तो उनकी लक में क्योंकि adjust करना दिखा है. So they will remain cool, and then they will have a lot of imagination in whatever they do or write. Very interesting. Very interesting. And they will have love for travel. That they have an deep aesthetic sense also, you can say, because love provides them that aesthetic sense. And they do that writing, painting, and they will be adjusting very well in this situation. That is what matters. They will adjust according to situation. And the last number I want to ask you is, if birth number is 3 and the luck number is 2, a combination, what would you say? So if your birth number is 3, you are born to assume responsibility. First thing keeping in mind. Want to assume responsibility, and you will have to have social adjustment. And then number 3 people, they are good at this oration. They have good speaking powers. Due to that, they command the situation. And then they never cause harm to anybody. अगर हम चार्ट देखते हैं ना नंबर्स का, कि what are your favorable numbers, what are your unfavorable numbers. So this is a single number who doesn't have any unfriendly or unfavorable number. To go deeply in the study of these numbers, 3 is the only number that doesn't cause harm to anybody. Beautiful. And in combination, conjunction with the luck number 2, then what changes? And then he or she will have fame on international level. Same for 5 also. They will also have fame on international level. And 2 numbers, they will adjust very well according to whatever situation in life comes now. They will adjust to it. They have way of adjusting situations. And then they will be good at writing and good at transcription if you come to creative part. So very beautiful. That aesthetic sense also will be there. That's it. So we had a little window of some details on number 1 through 9, be it the birth date, be it the luck number, which very beautifully is explained by Rajni ji. And we hope you will refer to her book for more information and learn about it, or call her or email her
Like I said, she has a blog site, she has an email ID, you can reach out to her. Let's turn to your writing. You are into poetry, you are into translations, you are writing on so many different issues. You have been in social service for many years. So tell me a little about your social service, the poetry writing, and then also the translation you've done of the wonderful, beautiful epic of Dr. Anand's epic. Yeah. So shall I begin with social service or with my writing? I think your choice. The platform is yours. आपको जो बताना चाहें आप please बताएं. Everything. If you may or may not be aware, Rajasthan में, I was working in Rajasthan as a school lecturer. So in education department they had a scheme, Rashtriya Seva Yojana, NSS, National Service Scheme. So I was a trained program officer for that. So general is tenure is 3 years, but I did it for 9 years. 6 years I did officially, and then 3 years I was there to support the neurology program officer. But she won't let me move away from the site for a single moment. That way it's 9 years. So in that scheme, we adopt a basti and a village. So we have to go to slum area, then we have these 100 students in it. So 50 from 11th standard and 50 from 12th standard. So along with us, they will go to that slum area. We will talk to, hello, are you listening me? Yes, I hear you clearly. Okay. So we go to slum, we conduct survey over there, we talk to women talk over there about their problems. We, particularly in Rajasthan, the style marriage is very much common. They have an Akshay Tritiya, on which they call it an auspicious occasion. Means they won't even consult any pandit for that. Akshay Tritiya is fixed, and even ministers will come to preside that function. So in this hundreds of these young girls, means below 8 or 7 or even newborn, उनको गोद में लेके फेरे दिलवाएंगे. That's it. And nobody objects to it. तो ये child marriage की आप बात कर रहे हैं? child marriage. तो हम जाके तो उनमें वो awareness create करते थे कि you have to oppose it, कि इस सिस्टम को खत्म करो. And then उनको family planning के बारे में भी बताते थे और हेल्थ इश्यूज के बारे में भी. और फिर जब ये पोलियो ड्रॉप्स देते थे उन दिनों बहुत कंप्लेंट्स होते थे, तो वी यूज टू हैव रैलीज, बच्चों को लेके जाते थे. आई रिमेम्बर एक लड़की थी, वन स्टूडेंट थी, शी वाज पोलियो इफेक्टेड, शी वुड लीड दैट बैनर, शी वुड लीड रैली. वो कहती थी मैं खड़े होके एक बैनर की एक साइड तो आई विल होल्ड दैट. ना दैट वाज द स्पिरिट. वो जाके फिर सबको बताती कि देखो आई वाज नेग्लेक्टेड सो आई हैड टू फेस इट. Right. So you actually took on lot of things as social service because it resonated with you. आप चाहती थी कि you make a difference in the society where injustice is happening. And we have given 10 days training in justice. And after that, my unit was so popular that once we were selected for state level, because one thing that I was good at anchoring to, and I was good at report writing. So whatever happened, whatever events took place in Bikaner, so we used to get it published in that. We had a white newspaper coverage, and then these clippings were sent. So there were no emails in those days in 1970. Correct, of course. Yeah. So that computer had just initiated it. So we used to send it by post register, post our head office at Jaipur, then they used to send it to go all over India coordinator. So first our team was selected for this state level, and afterwards we were selected for this national level. We went to Gujarat, Gandhinagar, and there 8 other states also participated, and very, very nice time to interact with others, to know their chants and all that. So otherwise also social service is something good. I would like to add, Rajni ji, even the work you do as a numerologist, numerologist, which takes up all your time, is social service because you're trying to help people who are going through confusions or who seem concerned and struggling with their life. It's also sort of social service. I have professionalized now, but previously I was doing it
free of charge. But whenever I calculated for somebody, I told them that just give me this much amount and I will give it as a donation to maid. अच्छा. Okay, she will get those. She can provide for we can provide it for education of her kids. तो स्कूल में भी जो maids होती थी उनको भी देके ये लो तुम रखो. But So you have had an inclination for social service all your life. So my mother and my parents, my grandfather, they had some sort of inclination towards social service and towards patriotism also. I tell you, my grandfather, then he used to do morning prayers. After that, in the end, he will make all of us stand up and usher national anthem. कभी सुना है कि आप प्रेयर कर रहे हो उसके बाद भजन? हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रगीत गाएं. In fact, Dr. Anand also behind the thinking and philosophy behind International Academy of Ethics is to bring in positivity in the society, be it through children, be it through writing, be it touching the lives of people. So he's gathering people around him who are like-minded. So I congratulate each one of you here, saying what a wonderful job. So that is why I'm associate member of this Indian Academy. Bilkul. I read one paper also in the recent conference held in Pune. In October it was held in Pune. So I also did paper regarding this social service and ethics and all everything. And otherwise too, I like to help people in problem. कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कईयों से मैं चार्ज नहीं भी करती हूँ. दैट्स माय रील. अब किसी का बच्चा खो गया, ये वांट्स मी टू. 5 बार ऐसा हुआ कि somebody a member of family was lost. एक नेपाल में था, 2 बार दिल्ली में था, राजस्थान में था. तो अगर वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा खो गया, हेल्प अस इन फाइंडिंग दैम, तो ऑफ कोर्स उस केस में मैं नहीं दूंगी उससे, है ना. या कोई अब इतना सीरियस है, ऑपरेशन के लिए जाने से पहले पूछ रहा है कि whether we should undergo surgery or not, तो depends on situation. और अगर कोई बिजनेस के लिए पूछ रहा है तो they are making money, so let me make money with. Beautiful thinking. It makes sense, absolutely. So now let's move on to your poetry, your writing, the translating, and the epic of Dr. Anand that you've translated also. Yeah. So regarding poetry, I had actually never thought that I will be writing poems. तब ये न्यूमरोलॉजी नहीं आती ना कि बता रहे कि 2 numbers number 2 or 3 will write. Your birth number is 2 or your luck number is 2? My luck number is 2 and my birth number is 3. तो दोनों में ही दिखना. 3 and 2. Oh my God, that's the number I asked about. So we talked about you. तो उसमें क्या है, तब ये नहीं पता था ना क्यों. पर while I was graduating, so side by side I was doing 5 years diploma course in fine art. So we had to go for on the spot painting. अब आप सोच रहे हो कश्मीर से ग्रेजुएशन किया है, क्या वहाँ की सीनिक ब्यूटी है, क्या मतलब बातियां हैं और क्या आपकी एज है, सारा कुछ मिला के आप देखो. So one day when we were going for on the spot painting, तो वहाँ हम जा रहे थे मानसपुर लेक के रास्ते में. तो एक लेक में I saw a lotus blooming. ठीक है. तो उसके बाद it was nearly time of sunset. तो उसके बाद उसकी पेटल्स बंद हुई. तो पेटल्स के अंदर वो बम्बल बी caught and trapped. That was the beginning of my poem. Then I asked one of my friends कि अभी सुबह जब ये वापिस इसकी पेटल्स खुलेंगी रोज की, तो will that bumblebee be surviving or what? That was my curiosity. What a beautiful thinking process. कि जो इसमें जाता है भावरा एक बार जिस स्कूल पे जाता है, इट विल कम व्हेन द पेटल्स ओपन, ये उड़ जाएगा, ये अलाइव होगा, ये उड़ जाएगा एंड फॉर द होल लाइफ विल नेवर कम बैक टू सेट. वो कविता आपके सामने है, अभी आप कोई कविता सुना पाएंगी, सुना सकती हैं? कविता अभी मेरे पास नहीं है. आई वांट टेल यू द थीम. उसका शीर्षक था कमल का अरमान, है ना. कि मतलब वो सारी रात हर सांझ वो इंतजार करता है उसकी, पर भंवरा हर जाए कभी लौट कर नहीं आता. That was the confusion of the book. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. वो मैंने सोचा नहीं था कभी मैं लिखूंगी. तो उससे एब्रप्टली स्टार्टेड. फिर उसके बाद क्या है, जैसे देखा कि बर्ड है ना. तो आई रिमेम्बर एज पर है ओस में नहाने के बाद, शबनमी धूप में जब अध खिली कली अपना चेहरा सुखाती है, कायनात निखरी निखरी नजर आती
खूबसूरत, बहुत सुंदर। छोटी छोटी पोएम्स लिखती थी, नॉट पर एक माइक्रो थोड़ा पोएम्स, झिझक सी माइक्रो पोएम्स जो डॉक्टर आनंद और मैं लिखते हैं, 4-4 लाइनर। आपसे सुनूंगी मैं जरूर। तो इस तरह से लिखी थी। पर एक वो बचपना कह लो, कुछ कह लो, एक पोएम लिखी, सरिता मैगजीन हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ, बहुत पॉपुलर। हाँ, लिखने के लिए भेजे, जिसको रिस्पेक्टेड देयर। गुस्सा आ गया कि नहीं, अब जिस पकड़ ली के तो तभी लिखूंगी जब इस मैगजीन में छपेगी। अच्छा, ओके। तो फिर से थोड़ी बहुत लिखी, ज्यादा नहीं लिखी। पर वो जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर, लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट, वो तो बात की बात है। तो 1990 में क्या हुआ कि मैंने फिर एक पोएम लिखी और सरिता में छपने भेजी, और वो छप गई। छोटी सी पोएम थी वो भी। तो उसको पढ़ने के बाद जो ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर ने सीधे मुझे अप्रोच किया कि सड़क के पार आपका स्कूल है, व्हाई डोंट यू कम टू रेडियो स्टेशन की, हमें भी कुछ फायदा लेने दो। तो उसके बाद मैं लगातार 19 साल तक ऑल इंडिया रेडियो पे गई। आफ्टर दैट, So I have a question for you here. You are a fatalist because you are into numerology, numerology, spiritual human being. तो आप मुझे ये बताएं, क्या रास्ते अपने आप खुलते हैं and things walk up to you, or is it that your thinking changes when the right time comes and you meet the right people? How does it work? Because you were not about writing you're asking, ना? हाँ, जैसे आपने कविता लिखना शुरू किया, आपने देखा भंवरा, आपका सवाल था कि वो बाहर छूने पर दोबारा क्या होगा, फिर आपको ऑल इंडिया रेडियो ने बुलाया। तो सवाल मेरा ये है कि एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट वुड यू से कि आप मानते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है खुद चल के आएगा, खुद अपने आप रास्ते खुलेंगे, खुद सही इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे? आई गिव 50% वेटेज कि एक तो आपका एप्टीट्यूड होगा, तभी तो आप लिखोगे। कोई भगवान ऊपर से थोड़े टिक के वो पेपर डाल रहा है कि ये लोग कॉपी ओके, है ना। तो मेहनत तो आप पहले थॉट तो आप ही लाओगे, फिर उसके बाद छपना ना छपना और बात, और आप कितने पॉपुलर होते हैं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। पर पहले अपने अंदर वो एक वो एट्रीब्यूट टू राइट शुड बी देयर ना, चाहे वो फिर उसको आप किसी वे में एक्सप्रेस करते हो, किसी भी जर्नल में आप एक्सप्रेस करते हो। अब जैसे मैंने ट्रांसलेशन का इनिशिएटिव, आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग ट्रांसलेशन। मैं लिख रही थी, एंड टू टेल यू फ्रैंकली, मेरी जो स्टार्ट कैसे हुई थी आफ्टर द माइस ऑफ माय हस्बैंड, सो आई यूज्ड है ना, डायरी मैं लिखती थी। तो उसमें जितना भी मेरा आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस था, तो वन फुल डायरी उसमें सब लिख लिया। अब मैं किसी को सुनाती नहीं थी, बस रखा हुआ था अपने पास। फिर उसके बाद मैंने, जैसे मेरी जो फर्स्ट बुक है, होने से ना होने तक पूछी बुक, होने से ना होने तक आपकी पहली किताब है। हाँ, तो वो दैट हैज बीन डेडिकेटेड टू माय हस्बैंड। और उसमें जो सारी पॉइंट्स है ना, वी कैन कॉल इट इमोशनल आउटबर्स्ट ऑफ ए लोनली लेडी, योर लॉस, योर लॉन्गिंग एंड योर लाइफ, कैरेक्टर इनडायरेक्टली आई कन्वेड दैट, है ना, स्मृतियों के रिकाम में। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि जो पढ़ता है रोने बैठ जाता है, तो दैट वाज नॉट माय इंटेंशन कि टू मेक अदर्स अनहैप्पी और टू मेक देम क्राई। फिर धीरे धीरे लगता ना, जब फिर आई मूव फ्रॉम पर्सनल टू इम्पर्सनल, कि आसपास देखो इलिटरेसी है और कितना वो पॉलिटिकल कैओस है, सोशल डिजनरेशन है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर टॉपिक्स दैट यू कैन राइट अपॉन। एंड सेकेंडली, जब ऑल इंडिया रेडियो जाते थे, कई बार तो बोलते थे, नाउ रजनी दिस इज गोइंग टू बी द ओकेजन, सो यू हैव टू कंपोज एटलीस्ट वन पोएम फॉर 10 मिनट का रिकॉर्डिंग होता था आफ्टर एवरी 3 months, वो फिक्स था। पर उसमें कभी कभी वो दे देते थे। एंड फिर उसके बाद क्या है कि मुझे न्यूमरोलॉजी से वो टॉपिक्स मिल जाते कई बार। आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ अदर्स, अनजान लोगों की बात सुन रही हूँ, और कोई तो इतना टचिंग होता है कि दैट ऑटोमेटिकली कम्स इनटू माय सेल्फ। तो मैं इससे प्लान नहीं करती हूँ, जैसे कुछ भी, जैसे मैं खड़ी पानी भरी हूँ में, तो थॉट विल सडनली कम टू माय माइंड कि उम्र, जैसे बुलबुला उसी टाइम उभरता है पानी में, और उसी टाइम ये बुलबुला खत्म, और उसमें जो अक्स था वो भी खत्म। तो बुलबुले में उभरने उम्र भर का साथ मिल जाता है फकत एक ही पल में, उम्र भर का साथ मिल जाता है कभी एक ही पल में, बुलबुले में उभरने वाले अक्स की उम्र होती है फकत एक ही पल की।
तो मैं बहुत कभी भी बहुत खूब। आई डोंट प्लान, बस कुछ भी देखा माइंड में आ गया लिख दिया। मैं सब ऐसे डायरी और पेन लेके जनरली आके उससे करता है। हालांकि 6 पोएट्री बुक्स हो गई हैं अभी, ये अंडर पब्लिकेशन है जी। एंड आप ये एपिक के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में बताना चाह रहे थे। आपने डॉक्टर आनंद की किताब को आपने ट्रांसलेट किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी मतलब ये बुक मेरी इसकी स्पेशल है कि वंडरफुल है कि Kesti, आप यू आर लिसनिंग, प्लीज शो द कवर ऑफ द बुक। आई कांट। नहीं, आपसे नहीं कह रहे, ही इज आस्किंग आवर होस्ट टू पुल इट अप। ओके ओके, आप बताएं, गो अहेड। हाँ, तो इससे पहले ना मेरी एक तो लस्टर से मिलसेक्स से वंडरफुल एपिक पोएम, और दूसरा ये कि इससे पहले मैंने 22 बुक्स ट्रांसलेट की हैं अब तक। दे आर ऑल फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस दैट आई ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। दिस इज द ओनली वन दैट आई ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। तो इनिशियली आई थॉट कि नहीं होगा मेरे से, कि मैंने कभी नहीं किया है हिंदी में। तो वैसे थोड़ी बहुत पोएम्स किसी ने इंसिस्ट किया कर दो, एक बांग्लादेश से किसी ने मेरी की थी पोएम्स जैसे पूरी ट्रांसलेट, है ना, मैंने उसकी ऑब्लिगेटरी 2 कर दी। बट आई नेवर प्लान कि मैं इस तरह से करूंगी। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि नहीं, मुझे मुश्किल काम लग रहा है। तो बोले आप एक साथ ले लो, आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं, बट यू गॉट। तो ठीक है। और उसके बाद जब मैंने पढ़ी बुक तो आई डिडंट हैव पेशेंस टू गो थ्रू द होल बुक। मुझे पहला ही पेज इतना डील कर गया कि मैंने सीधे डायरी उठाई एंड आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट। एंड यू वोंट बिलीव कि ये मेरी इतनी बड़ी बुक है। आई कंप्लीटेड विद इन 17 days only. So there is an interesting fact trivia for you. Dr. Anand, how long did you take to write the epic? Because he is another person who churns out writing. So आप बताएं, आपको कितना वक्त लगा ये एपिक लिखने में? ऐसे है, ये जो बहुकाल ट्रिलॉजी मैंने लिखी, 3 किताबें लिखने में आई टुक 3 months। तो अंदाजन 1 महीना अगर पकड़ के भी चलते हैं ये किताब। 1 month और हाँ, तो 1 महीने में इन्होंने लिखी, 17 दिन में आपने ट्रांसलेट कर दी। और उसके बाद 1 दिन उसका फॉरवर्ड लिखने में लगाया मैंने। दैट वाज टोटल 18 days आई डिड इट। So will you like me to read some aspects about it or some basic things for the awareness of others? Sure, please go ahead. So I have to read out that. This is your event, your program, whatever you want to do. So, Lustus, as the author remarks, is a successor of Saturn who has grown feeble and infirm and is constantly worried as to who will manage kingdom of darkness after his departure from this world. His mind still is worried about how to spread anarchy in the world. So with undaunted determination to wreck the empire of peace and divinity created by God, Saturn. Okay, good. Yeah, lovely. So this has been created by you, I suppose. By Dr. Anand and his family. Yeah. You all belong to my family. Thank you. I agree. I stand corrected. Okay. So shall I continue? Yeah. Please. So with undaunted determination to wreck the empire of peace and divinity created by God, Saturn enthrones Lustus, his younger cousin brother, to rule over the kingdom of darkness. Lustonia is the name of democratic country. His constitution is named as Lustitution and justice as Lustis. In a very well organized manner, Lustus promotes greed, lust, loveless relation in human relations, and undertakes the task of destroying this beautiful world and wages war against God. Now I will recite some extracts in Hindi. मैं अब भी भरपूर जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अब भी भरपूर जीवन चाहता हूँ, तूफान लाना चाहता हूँ, तूफान लाना चाहता हूँ और सागर में क्रोध का उफान लाना चाहता हूँ। बहुत सागर में क्रोध का उफान लाना चाहता हूँ। A few more lines I'd like to recite if I have time. बिल्कुल, आपके पास समय है। फिर उसके बाद के नया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है।
जस्ट एज वी हैव 10 कमांडमेंट, इसमें भी 10 आज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं ताकि सुनियोजित ढंग से बुराई का प्रचार किया जा सके और मानव जाति धर्म से भी मुक्त, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और भ्रष्टों की प्रशासन में मुख्य कार्यभार संभाले। सो आई विल रिसाइट वन कमांडमेंट आउट ऑफ दिस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देवालयों से पुजारियों को हटा दो, देवालयों से पुजारियों को हटा दो, पाठशालाओं से अध्यापकों को हटा दो, पाठशालाओं से अध्यापकों को हटा दो और विश्वविद्यालयों से दार्शनिकों और प्रोफेसरों को। अच्छा, ये डॉक्टर आनंद ने ये विश्वविद्यालयों से दार्शनिकों और प्रोफेसरों को। हमें तो कट्टर पेशेवर चाहिए, हमें तो कट्टर पेशेवर चाहिए जो ऐसी ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा दे जो कि सिखाए कि कैसे ईश्वर को धोखा दिया जाए, कैसे ईश्वर को धोखा दिया जाए और नर्क की स्थापना की जाए। और वे सभी ज्ञान प्रणालियां जिनसे आत्मा की गंध आती है, वे सभी ज्ञान प्रणालियां जिनसे आत्मा की गंध आती है, तो कचरा पात्र में पड़े रहना चाहिए, उन्हें तो कचरा पात्र में पड़े रहना चाहिए। फिर उसके बाद वो जब इंटरव्यू कंडक्ट करता है कि दैट हु विल बी गिवन एंट्री टू दिस कस्टोडिया, है ना, और उनकी जो पार्लियामेंट में कैसे लोगों को पूरा उनका नेटवर्क होता है कि सारे जो इंटरव्यू ये उसके लिए प्रेस रिपोर्टर्स एंड ऑल दैट। और फिर ये है कि उसने किसको एंट्री दी जाएगी, ये नहीं कि हर कोई लसोनिया में आके बस जाएगा। तो अंधकार के राज्य में निम्नलिखित प्रकार के नव आगंतुकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। देन इट इज लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस दैट विल बी गिवन एंट्री टू किंगडम ऑफ डार्कनेस। राइट। नाउ इट इज ए स्पेसिमेन, वह जिसने 10 वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाई हो, वह जिसने 10 वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाई हो, जिसने एक कोख की अजन्मी कन्या की हत्या की हो, एक अजन्मी कन्या की हत्या की हो, वह जो किसी कारखाने का मालिक हो जिससे जल प्रदूषित हो, एवरीथिंग इज प्लान टू डिस्ट्रॉय, राइट। वह जो किसी शहरी क्षेत्र से हो, वह जो जानवरों से घृणा करता हो, जिसके मन में कभी प्रेम और रोमांस जैसी अवधारणाओं के चक्कर न लगाए, टोटली डिवॉइड ऑफ पैशन। एक ऐसा वर्ड जिसमें कि आप पोल्यूशन फैला रहे हो, जिसमें आप पेड़ों को गिरा रहे हो, कोई एम्बियंस के लिए अवेयरनेस नहीं है, देयर इज नो लव, देयर इज नो डीप ह्यूमन पैशन, everything is mechanical and everything should be planned to destroy this beautiful world created by God. तो ये क्या लफ्ज़ है, ये मानसिक विकृतियों की दास्तान है, राइट। मानसिक विद्रुपता का भयानक आईना दिखाता हुआ एक नाटकीय एकालाप है, and I am eagerly waiting for it to get published as soon as right. Congratulations on such a beautiful job done in 17 days plus 1 day for 4 words. Absolutely brilliant. I then have to pack numerology for few days. You know, I published daily predictions since 2008. कितने साल हो गए ना, I can't leave it for a single day. अखंड जैसा है, तो then I do at least 3 months prediction in advance. Then I update them in my upload it in my updated site. तो मैं कहीं जब रात को 12 बजे मेरी prediction छप जाएगी, हो जाता है। उसके बाद I can devote to poetry. Yes, I have inclination towards poetry, but then I have to retain a balance between two. कि अब जो इतने सालों से लोग रात को 12 बजे वेट कर रहे हैं predictions पढ़ने के, I can't disappoint them. तो फिर मैं एक मिड डे निकालती हूँ। तो फिर मैंने अपनी तरफ से लिटरली आई प्लान है, कम से कम 3 महीने लग जाएंगे इसको करने में, पर पता नहीं कैसे होता गया। भगवान हाथ पकड़ के करवाता है। Absolutely. There is some divine force, whatever one believes in. Yeah. So it's beautiful. Yeah. So आपको डॉक्टर आनंद कैसा लगा ये, आपको आपने जो सुना, आपको जो सुनाया गया अभी हिंदी में, आपकी रचना आपको कैसी लगी इस तरह सुनते हुए?
मुझे एक्चुअली आई एम रियली सरप्राइज्ड कि उस किताब में इतनी अट्रैक्शन है कि रजनी जी ने उसको देखा और एकदम शी स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट और बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर दिया. दैट शोज द पावर ऑफ द बुक एक्चुअली. तो उसके कंसेप्ट ऐसे हैं एक्चुअली, जैसे रजनी जी पढ़ रहे थे ना, ये पॉल्यूशन होनी चाहिए, ऐसे लोग, दिस इज सटायर. जो आज का हमारा युग है ना, उस पर ये सटायर है. और उसमें हमने, जैसे आप टीवी देखते हो ना, टीवी का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, मान लो रामायण देख रहे हैं, वो बीच में से काट देते हैं, काट कर अपना छोटी सी ऐड देकर फिर शुरू कर लेते हैं. तो ये सारा जो ड्रामा है ना, इसमें भी ऐसे ही बीच बीच में से काट काट कर उसको बनाया गया है. एब्सोल्युटली आई हैव फॉलोड दैट टेक्निक सटायर की वजह से. तो मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ कि नाउ इट विल बी रीचिंग द हिंदी ऑडियंस. करेक्ट. इंग्लिश ठीक है, वर्ड में है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी जो है उसकी फॉलोइंग ज्यादा है. तो हमारा जो पंजाब है, यहाँ पंजाबी की फॉलोइंग ज्यादा है. इंग्लिश की जो ट्रेडिशन है बहुत कम है. पढ़ते तो है लोग, लेकिन उस शौक से नहीं पढ़ते जिस पढ़ते हैं. हिंदुस्तान में हिंदी इट कम्स मोर इजीली, समझ भी जल्दी आती है. तो इंग्लिश का जो फील्ड है वो आप हिंदुस्तान के बाहर, और इट इज ऑल इंग्लिश, और तो कुछ समझ नहीं आता किसी को. सो वो एक अपना बेनिफिट है इंग्लिश में लिखने का. लेकिन ये बात बहुत बढ़िया है कि देखिए, हमने जो व्हेन आई वाज यंग इन 9th क्लास, हमने जो लिटरेचर पढ़ा सबसे पहले, इट वाज रशियन लिटरेचर. तो अगर वो रशियन में होता तो हम कैसे पढ़ते? So true. Very well said. So actually, I should congratulate Dr. Anand on writing and Rajni ji on translating. So congratulations to both of you on a beautiful job done with the epic and waiting for it to come out. And Rajni ji, आप हमें अपने बारे में और क्या बताना चाहेंगी? We would love to hear from you. What else can you share about your plans today and for future as a person, as a numerologist, nemiologist and a poet? What are your plans? एक तो मैं चाहती हूँ, मेरे मन में है, और मन में अगर इच्छा आती है ना, तो समझ लो 50% ऑफ इज डन. कि आपके मन में ख्याल तभी आया जब ये होना है, पहले क्यों नहीं आया है ना. कि अगर कुछ भी मेरे मन में आता है ना, किसी चीज का ख्याल, तो मैं एकदम से उसको शुरू कर देती हूँ कि भगवान चाह रहा है, ये जीवन से हिंट कि तुम्हें काम करना है, और बाकी तो हमारी मेहनत से है ना, कितना कर सकते हैं. और जिस टाइम जो काम होना है ना, तभी होता है. ये लस्टस मुझे डॉक्टर आनंद ने अभी नहीं दिया था. ही हैड गिवन मी इन जुलाई. He had sent it to me by post when I was staying in बीकानेर. तो मेरे घर का रेनोवेशन चल रहा था उस टाइम, और एक तो छतें भी कोलैप्स करती थी, तो सो आई वॉज बैडली ऑक्यूपाइड विद दैट. तो मैंने उसको उठा के देखा तकनी से. देन आई लेफ्ट इट देयर ओनली. सिंगापुर में भी मुझे ढूंढने की कोशिश की, मुझे मेरी लाइब्रेरी में couldn't find. फिर मैंने आके ये जब स्टार्ट किया, उससे कुछ दिन पहले डॉक्टर आनंद को रिक्वेस्ट की कि कैन यू सेंड मी वन अगेन टू मी. देखो, तब मिली और फिर भी मैंने नहीं की, पर अब आई वॉज जस्ट टाइम टू डू इट एट दिस टाइम. तो फिर जब शुरू किया तो देख लो अब, है ना. तो एक तो मैं कहती हूँ कि अगर मन में ख्याल आए कि यदि आपको करना है तो कर ही डालो. कि एक पेज ही पढ़ा है, पेज टू गो थ्रू होल ऑफ इट, तो एक ही बारी में कर लिया. और दूसरा, मुझे एक मेरे मन में इच्छा है कि मैं किसी फॉरेन कल्चरल डेलीगेशन में जाना चाहती हूँ. Tathastu. May that happen soon for you, sooner than later. कि पीछे कोविड टाइम से पहले प्लान बना था, वी सपोज टू गो टू 4 कंट्रीज, पूरा मतलब डेलीगेशन जाने वाला था, तो नहीं हो पाया और तब नहीं जा पाई. और एक वो छोटी सी दबी सी इच्छा है, छोटी नहीं एक्चुअली, मेरे बहुत बड़ी है. माई ग्रैंड सन इज राइटर एट एज ऑफ 10.
फर्स्ट फ्लाइट उसने लिखी थी और उसने भी लस्टस पढ़ना चालू किया था। वो बाद में मैंने उसको रोक दिया आफ्टर रीडिंग 40 पेजेस, जिससे समवट मैच्योर थी फॉर यू, थोड़े और बड़े हो जाओ। तो वो लर्निंग स्पेनिश है स्कूल, और वो मुझे कहता है कि दादी डोंट यू वरी कि इस बुक का ट्रांसलेशन तो आपकी बुक का किसी भी एक बुक का ट्रांसलेशन तो मैं करूंगा स्पेनिश में। तो आई विश हिज विश कम्स ट्रू कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि he excels me in writing poetry in translation. I send all the best wishes to your 10-year-old grandson, and may he translate Lustus the Epic by Dr. Anand into Spanish soon in future. The first And he will आपके translate, क्या he said first he will translate mine. अच्छा अच्छा, of course, दादी comes first and then you are दूसरे a दादा। you are a celebrity for me first of all, कि पहले आपका काम होगा। Of course, होना ही चाहिए, लॉयल्टी भी तो एक चीज होती है ना। बिल्कुल सही है। That's fabulous. And so what does Rajni ji want to do other than continue predicting every night before 12 midnight and writing poetry and maybe getting a doctorate she wants to, or help her grandson write in Spanish the book she has written, or go overseas? What else would you like to do and accomplish? So, first of all, I will request all my viewers and audience to go through my site www.numerology.com. If I am referring it because it offers daily predictions both in Hindi and English 2 days in advance, and I don't omit the prediction of previous day. You can tally that it all. You can compare and you can see that what I had written, it went true. So I am referring it to all because generally first of all, it is free of cost. There is no monetary reason behind it. It's just free of cost. और वो इसलिए है कि आपको एक तो विश्वास आ जाता है, आपको ये है कि आपको पता रहता है कि किस चीज से आज बचना है। जैसे ये मैंने एक पॉइंट क्लियर किया है कि जब आप जनरली आप प्रेडिक्शंस पढ़ते हो न्यूज़पेपर्स में डालते इन कॉलम्स, तो आप क्या करते हो कि एक जनरल प्रेडिक्शन होती है और मैंने उसमें लिख रखा है कि आप पहले अपना बर्थ नंबर और लक नंबर निकालिए। तो जब आप प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं तो आप उसमें बर्थ नंबर पढ़िए ये देखने के लिए दैट व्हाट आर यू आर सपोज टू डू टुडे, और उसके बाद आप पढ़िए अपना लक नंबर कि आज आपको लक से क्या मिलने वाला है, कि डोंट रिलाई ऑन ए सिंगल फैक्टर, है ना। तो ये मैसेज है, डोंट रिलाई ऑन ए सिंगल फैक्टर, दोनों चीजें पढ़नी है आपको। तो हम सबको ये न्योता देते हैं कि आप रजनी जी के साइट पे जाएं, पढ़ें वो क्या आपको प्रेडिक्शन दे रही हैं, कल जो गुजर गया उसके बारे में भी आप पढ़ें और कंपेयर करें, और आज के बारे में भी पढ़ें और आप देखें और आपका बर्थ नंबर लक नंबर दोनों के बारे में समझें एंड देखें हाउ रेलेवेंट इट इज फॉर यू. And her books on numerology, namiology, poetry are all available. And we welcome all of you to reach out to her who are interested in finding out more about yourself. And Dr. Anand, I invite you to please say something about Rajni ji and your experience listening to her beautiful journey. And Rajni ji, I wish you the very best and thank you for your time. Thank you. And thank you, Dr. Anand, for this platform. Actually, it was a very soulful experience. Rajni ji was talking about things which impact us, affect us, very deeply. Everybody wants to know what is in store for him. I think this is the greatest desire in every heart. So the way she has, I think she is going about it in a very scientific manner. It is not any sort of superstition or something. And that way, I think it is very valuable. Personally speaking, I believe that we are controlled by the movement of stars. And they determine so many things in our nature. And just as things in our house, they belong to us, in the same way in this whole universe, we are also objects and we belong to some system. We cannot step out of it. And whatever we are doing has some divine justification. Whether we are doing good, whether we are doing bad. But essentially, I believe that we are all made of good. Basically, this is my
feeling that we are all made of good. If there is evil or bad, this is some crust which is, frozen on our essential shining material. Just strip it off and you will see the shining stuff. Essentially, we are all good. God deals in goodness. So, what a beautiful description of the shininess in each one of us, with some flaws which of course can be removed with effort if one is aware of it. And I take this opportunity to invite the two of you to hold up your books and show us what you can, if you have anything accessible around you, so we all can see the books that you have. First of all, this is a book which which is I and RUPA had written, and one more book is also coming. This is Soul Pit. The new one is RUPA Tell. Gold Mine, because Soul Pit was the brainchild of the two of us when we were just going back and forth, and I said, हम यूं ही बात करें, इससे अच्छा हम क्यों ना कुछ लिखें. तो हम दोनों ने 4 लाइनर लिखनी शुरू की. तो जिस वर्ड से हम फिनिश करते थे वो 4 लाइन, दूसरा बंदा वो कंटिन्यू करता था उस वर्ड के साथ में. इस तरह से हमने 200 माइक्रो पोम्स लिखी सोल पिट में. एंड सोल पिट इज नथिंग बट एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ what is called a sand pit or a sandbox where children play. So that's why the name Soul Pit, and that's how this came to be. And then the extension of that was again, Dr. Anand said कि हम philosophy pit लिखते हैं. करते करते वो गोल्ड माइन बन गया, क्योंकि इसमें गोल्ड नगेट्स निकली हमारी. हम क्या करते, हम पहाड़ गए, खोदने निकले सोने के छोटे छोटे नगेट्स, तो उसको गोल्ड माइन बना दिया हमने. अब वो निकलने वाली है. तो बस इसी तरह हम बातें करते करते, खेलते हंसते लिखते जा रहे हैं. So I'm so excited about the future of so many more things to do together with Dr. Anand, and hopefully with you also, Rajni ji. It's such a pleasure meeting both of you and having you in my life. And now Dr. Anand is showing the 2 books he received. Let's talk about that. So this is actually I was thinking of releasing these books later this month. So this is Ethicadia 1. It belongs to Pune research papers. People who, read out their papers. This is the editorial board. And in the same way, this is Ethicadia 2. This is the editorial board. These are very heavy books. And two more things which have come just now is my latest 12th epic, Suffering Favorite. And you can see very important people who have written something about it. And here is Dr. Maya. She has written so much about me and so beautifully that people start quoting about it. So this is a very important book which we will release soon. And this is the literary voyage of Dr. Anand. This is the translation of a Punjabi book which was written by one of the topmost Punjabi critics about me. This has been translated into English, and this has been done by my son. His photo is there, Manvinder Singh. This is the author of Punjabi writing, and this is edited by Dr. Rohaya Farsi. She is my literary biographer from Iran. She has written more than 15 articles on my work. So this is all about these books have come up. I just tried to show it up. We will release it formally. That Rajni, you can also show up your books. Rajni, if you have any books by you, because we know you've written many, translated many, if there's anything accessible आपके आसपास हो, please hold up your books. Actually, most of my books, they are in my library at Bikaner. I have residence over there. Okay. So I got a few of them here only, but instead of showcasing all of them, I would like to show you one translated book from each language and several books on Numerology. We haven't discussed Numerology. That's an additional branch of Numerology. Please take 5 minutes to talk about Numerology before we close it and show your books. Okay. So in Numerology, we assign a numerical value to each alphabet of your name. जैसे एक numerical value 1 है.
1 है. Just like that. B की 2 है. It's not in sequence. Sequence of Correct. कुछ concern नहीं है. So you assign numbers also to the letters. There, Dr. Yeah, Anand is to the holding up your book. This is you got it. This is the latest. This is the latest. And published on Sikkim. All right. Beautiful. So it's the second Fantastic. edition is also under publication now. First one is also exhausted within 1 Wonderful. week. So nice, so nice. So I was telling that the numerical value is assigned to each alphabet of your name. जैसे मेरा नाम ही आएगी, for example, R है तो आपकी numeric value 2 है, A का 1 है, then J का भी 1 है, I का भी 1 है और N का 5 है. तो इसका जो numeric value का जो total है, it should match. हम देखते हैं कहीं किसी का ज्योतिषी भी बोलते हैं कि नाम रखिए आप बच्चों का, नामकरण कीजिए. So what's the reason behind कि जो आपके नाम की जो स्पेलिंग की जो टोटल न्यूमेरिक वैल्यू है, that should match with your luck. Oh my God, I never knew this. Okay. So, for example, RUPA, R-U-P-A, that would equal what number then? So R is 2, U is 6, P is 8 and A is 1. So you combine it. So 8 plus 8, 16, plus 1, 17, plus 2, 19, that's number 10, that's 1. नहीं, ये नहीं 10 है उसमें, just your name. हाँ, RUPA मैंने किया, आपने जो बताया 8 and 1 and 2. हाँ. So And 17, 18, 19 is 10, that's number 1. 19 है ना, so this name is not favorable for you. Oh my God! It needs to be changed. अच्छा, और ऐसे आप उसका आगे अपना सरनेम से कैलकुलेट कर लो, ये भी सरनेम के. अच्छा, there is RAO, that I have to add that. हाँ, so you add that. तब मुझे लग रहा है सेम आ जाएगी, that I have to write out. हाँ, no problem. I was just asking. Yeah, we can. बेसिक ये है कि जो आपका जो न्यूमेरिक वैल्यूज का टोटल आएगा, it should be close to your luck number. बर्थ नंबर से इसका कुछ कंसर्न नहीं. I see. कि एज से नहीं मैच करना है हमने, इसको आपका जो टोटल आएगा 2 आ रहा है ना, उससे मैच करना है. और अगर नहीं है तो वे एडजस्ट स्पेलिंग. मूवीज का नाम रखते हैं, वो एक पूरा हर किसी उसमें के डाल रही थी, तो बेसिक वही होता है कि जो उसका टोटल है जो मूवी का नाम का, वो या तो प्रोड्यूसर के नाम से, डायरेक्टर के नाम से या एटलीस्ट हीरो हीरोइन के नाम से it should be compatible. कि अगर किसी के साथ भी नहीं तो that movie is going to show. So interesting. So to our audiences who are listening in and those who will listen in later, we want to invite you to learn about numerology, numerology, reach out to Rajni Chhabra or email her or call her or read her blog site. She talks about it and figure out if you can change anything and align with your destiny better and do better in life. Okay. Thanks a lot, Rupa. Now I know you're perfect at the art of interviewing. Dr. Anand had already told me that now I know you have knack of interviewing. Oh, you're so kind. I'm so humbled. And then I will extend my thanks to Dr. Anand and Dr. Maya SEKULIC and then Maya HERMAN SEKULIC and to, of course, you and to the coordinator that you made it also congenial and easygoing. That is more than my expectations. Thank you once again. Thanks. You're most welcome. We all had so much fun. And before I hand over to you, Dr. Anand, to close let me thank Rupa also for the time and making it a really memorable and a very precious and valuable interview. And I am also thankful to our friends, SEEMA, JAIN, Dr. Maya HERMAN SEKULIC, and all others who are associated with our body. Thank you, Rupa. If you want to say anything else from me. I want to just say one thing more. Of course, thank you very much, Rajni ji, for a wonderful showcasing of your skill set and personality and essence. And we look forward to more from you and interacting more with you.
Dr. Anand, thank you for this wonderful platform where we can talk and we will have more of such interesting, eminent people we can interact with. And Dr. Maya, SEEMA, JAIN, thank you. And Preeti and Mukesh, thank you so much for being there and coordinating. We don't see you, but we know you are there. If you can come on in just for a second. I want to thank the two of you for making this an event that we could be a part of. Mukesh and Preeti, you think you can come in for a second and... Hello, ma'am. Hello, Preeti. Thank you so much for making this possible, and we really appreciate this platform today, thanks to your coordination. बड़ा interesting था जो actually my favorite numerology part. अच्छा. I enjoyed it. कुछ काम का था उसमें कुछ आपके नंबर निकले? Actually, I am very interested in that. I do predictions. Actually, researching on that, like. Fantastic. मेरा नंबर मैं आपको देने जा रही हूँ. That is so interesting. When I was growing up, when I was young, not now, I used to read Kiro, just like Rajni ji said, how she started, and then, of course, face reading, palmistry, handwriting analysis, anything and everything interested me. Now, of course, life happens, which is no excuse, but it's just very fascinating when somebody does all this. So that's lovely, Preeti. Keep it up. And Mukesh, I don't see you. I don't know if you plan to come on or not. In case you do, great. In case not, thank you so much for everything today. Thank you. And thank you once again, Rajni ji, Dr. Anand, and Preeti and Mukesh. And good night, good day, wherever you are. Bye-bye. Thank you. Namaste. Good night. Good night.